Hey guys, welcome back to my channel Pharma Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on techniques used for the measurement of therapeutic drug monitoring from the chapter Therapeutic Drug Monitoring. For my previous videos on therapeutic drug monitoring, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. Let's talk about the technique used for the measurement of therapeutic drug monitoring. So there are different techniques which are used for the measurement of therapeutic drug monitoring. First one is the HPLC, that is high pressure liquid chromatography. So basically high pressure liquid chromatography, or you can say that the high performance liquid chromatography. So it is a separation technique. So it separates the component according to their affinity towards the stationary phase. Now next is the LCMS, that is liquid chromatography mass spectrometry. So it is same as that of the high pressure liquid chromatography, but mass spectrometry is attached to it. So it is also a separation technique, or in this there are two phases of materials are used to separate the components of a solution. So the mobile phase carries the sample along the stationary or the solid phases which separate out the components in the sample. Next is the GCMS, that is gas chromatography mass spectroscopy. So basically it is also a separation technique. So the separation is based on the high temperature to cause the sample for vaporization. In mass spectrometry, the vaporized fractions are passed through an electrical field. So the molecules can be separated on the basis of their molecular weight. So basically the components you get or you can detect is a fingerprint for the identification. So GCMS is a gold strength method for the identifications of the drug of abuse. Next is the EIA, that is enzyme immunoassay. So basically immunoassay होता क्या है कि ये ऐसी टेक्निक होती है, ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें कि आप एक क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कितना प्रेजेंट है, जैसे कि कोई हार्मोन हो गया, ड्रग हो गया या स्पेसिफिक प्रोटीन्स हो गए, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के बेसिस पे कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है अपनी बॉडी में, सो वो डिटेक्ट करते हैं. So that is called as the immunoassay. तो अभी जो एंजाइम्स इसमें यूज होते हैं बाइंड करवाने के लिए, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स वी कैन यूज. सो फर्स्ट वन इज HRP, दैट इज हॉर्स रेडिश पेरोक्साइड, एंड AP, दैट इज अल्कलाइन फॉस्फेट, OPD, so that HRP is the horseradish peroxide enzyme, and this is the substance which is used for this enzyme. Then OPD is orthophenylene diamine dihydrochloride. So that is also an enzyme. For these enzymes we can use the substrate PNPP, that is para-nitrophenyl phosphate you can use. तो बेसिकली जो एंजाइम इम्यूनो से होता है, इसमें अपन क्या करते हैं कि ये आपके नॉन रेडियो एक्टिव एंजाइम के लिए यूज़ होता है, जो कि आपके रेडियो एक्टिव मटेरियल से लेबल नहीं होते हैं, उनके लिए यूज़ होता है. सो जितने भी ड्रग्स को आपको टेस्ट करना होता है, उसमें जो प्रिंसिपल रहता है बेसिकली वो क्या होता है कि एंटीजन जो रहेगा आपका एंटीबॉडी एंजाइम कॉम्प्लेक्स से बाइंड होगा और वो बनाएगा आपका एंटीजन एंटीबॉडी एंजाइम कॉम्प्लेक्स. देन जितने भी एंटीजन एंटीबॉडी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, उसको अगर आप पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ में ट्रीट करवाते हो, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट इज़ एंटीजन एंटीबॉडी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये एक तरीके से कलर चेंज देगा. तो विद कलर चेंज यू कैन डिटेक्ट दैट सम रिएक्शन इज गोइंग ऑन, और कुछ तो भी डिटेक्ट हुआ है, तो यू कैन डिटेक्ट दैट इंटेंसिटी ऑफ द कलर विद द हेल्प ऑफ कलरोमेट्री. तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है. सो बेसिकली जो भी आपके एंजाइम इम्यूनोसॉर्बेंट असेज होते हैं या इम्यूनो असेज होते हैं, तो उनमें आप उसको टेस्ट करने के लिए पॉलीस्टाइरीन माइक्रोटाइट्रेट प्लेट को यूज़ करते हो, जो कि एक तरीके से 96 वेल की प्लेट्स होती है, या फिर वेरी करती है. इनका जो रेशियो होता है वो होता है आपका 2:3 का रेशियो होता है प्लेट का, और इसमें जो वेल रहते हैं दैट कॉल्ड एज अ वेल. सपोज दिस इज़ अ प्लेट एंड दिस kind of thing is called as the well.
तो दिस दे आर डीप इनसाइड सो दैट यू कैन फील द सैम्पल. सो ये 96 वेल की भी हो सकती है, 384 वेल्स की भी हो सकती है और 1536 वेल्स की भी हो सकती है. तो जो सिंपल टेक्निक अपन यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप जो भी एंटीजन कंटेनिंग सैंपल है उसको आप इन वेल में पुट करते हो, फिर उसके बाद में वॉश करते हो इन प्लेट्स को by using triphosphate buffer solution that is of the pH of 7.4 and detergent twin 20. इसका रेशो रहता है 0.01 to 0.05% रहता है. और इसके बाद में आप इसमें ऐड करते हो एंटीबॉडी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद में वापस से इसको वॉश ऑफ करते हैं विद बफर. फिर इसके बाद में आप क्योंकि जो भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनना होता है वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जो एक्स्ट्रा रहता है उसको वॉश करना रहता है बफर सॉल्यूशन के साथ में. इसके बाद में आप सबस्ट्रेट को ऐड करते हो, तो सबस्ट्रेट को ऐड करने के बाद में जो कलर रहता है वो चेंज हो जाता है जनरली. दैट इज़ देखा जाए तो ब्लू कलर में अपीयर हो जाता है. फिर उसके बाद में H2SO4 के साथ में उसको ट्रीट करवाते हैं तो जो ब्लू कलर रहता है वो येलो कलर में चेंज हो जाता है. और देन विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमेट्री यू कैन चेक द इंटेंसिटी ऑफ दैट कलर एंड यू कैन डिटरमाइन दैट सब्सटेंस. सो जो इम्यूनोअसेज होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. दैट इज़ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच या कॉम्पिटिटिव एलिजा टेक्निक यू कैन से. तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आपने पढ़े ही होंगे. अब पढ़ते हैं रिया. सो बेसिकली जो रिया होता है दैट इज़ रेडियो एक्टिव एंजाइम इम्यूनोअसे. सो इन दिस वी कैन यूज द रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द एनालाइट. सो इन रिया द सैम्पल इज इंक्यूबेटेड विथ एंटीबॉडी एंड रेडियो लेबल ड्रग. तो आप इसमें क्या करते हो, रिया में आपका सैंपल तो है ही, सैंपल आपने ले लिया, उसको इंक्यूबेट करोगे एंटीबॉडी के साथ में विथ रेडियो लेबल ड्रग. सो द एंजाइम ऑफ द रेडियो एक्टिव मेजर्ड इज कंपेयर्ड टू द रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट इन नोन स्टैंडर्ड. सो यू कैन कंपेयर द रेडियो एक्टिविटी ऑफ दिस सैंपल विथ दैट ऑफ द स्टैंडर्ड. देन you can detect that result quantitatively. Now next technique is पिटीनिया. So basically जो पिटीनिया टेक्निक्स होती है तो फुल फॉर्म क्या था पिटीनिया का, एंड इम्यूनो टर्बीमेट्रिक मेथड जिसको बोलते हैं पार्टिकल इन्हेंस्ड टर्बीमेट्रिक इनहिबिशन इम्यूनोअसे. सो दिस मेथड यूजेस द क्रिएशन ऑफ लाइट स्कैटरिंग पार्टिकल टू मेजर द ड्रग लेवल. तो टर्बिडोमेट्री में बेसिकली तो इस टेक्निक में अपन क्या करते हैं, आप यहाँ पर देखिए कि आपने एक सॉल्यूशन बनाया है दैट इज़ विथ बैक्टीरिया विथ न्यूट्रेंट मीडियम. दिस इज़ बैक्टीरिया विथ न्यूट्रेंट मीडियम. तो आप एक सॉल्यूशन आप लेते हो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, और एक लेते हो आप सैम्पल सॉल्यूशन. तो जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसमें आपको क्या करना है कि डिफरेंट 5 ट्यूब्स लेनी है. 5 ट्यूब्स लेने के बाद में आपको हर एक ट्यूब में ये डिफरेंट 5 ट्यूब्स आपने ले ली. सपोज करो इन 5 ट्यूब्स में यू हैव टू ऐड 9 ml ऑफ दिस बैक्टीरिया विथ न्यूट्रिएंट मीडियम. दैन a standard sample you have to add 1 ml. So you can take different concentration of this standard solution and you can vary the concentration or the ml of that bacteria with nutrient medium. Then इसके बाद में sample के साथ में भी same as it is you have to perform that. You have to take this 5 tubes and add 1 ml of sample, then 9 ml of this bacteria with nutrient medium. You can take it in a different concentration, then compare the turbidity of the standard and the sample solution. So with comparison you can get the results. So before taking the turbidity comparison you have to incubate it for 3 to 4 hours at 37 degrees Celsius. After that you can check the turbidity, whether the solution has passed the test or not. Now next is EMIAT, that is enzyme multiplied immunoassay technique based on the
competition for the target analyte antibody binding site. So it is same as that of the competitive ELISA, that if antigen concentration is very less, then you have to add the unlabeled antigen antibody complex, then you can add the antibody enzyme complex, then further that you have to add the substrate. So ये आपका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट इज़ एंटीजन एंटीबॉडी प्लस एंटीबॉडी एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा. तो जितना भी मतलब कि लेस कॉन्सेंट्रेशन है एंटीजन का, तो जितना ज़्यादा आपके ये एंटीबॉडीज़ के साथ में कंपटीशन करेगा. सपोज़ फॉर एग्जांपल के लिए देखो, ये आपका है एंटीजन एंटीबॉडी वाला मिक्सचर आपने लिया है ना, तो ये बहुत ही एंटीजन का जो है कॉन्सेंट्रेशन इसमें कैसा है, बहुत ही लेस अमाउंट है. फिर उसके बाद में आप एंटीबॉडी और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स ऐड करते हो, तो क्या होता है कि ये एंटीबॉडी के साथ में ये एंटीबॉडी एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या करता है, कंपटीशन करता है, और इन एंटीबॉडी को रिप्लेस करके ये वाला बाइंड करता है उसके ऊपर. तो जितनी भी रहेगी उसको वॉशअप करके फिर सबस्ट्रेट के साथ में ट्रीट करवा के यू कैन कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर सैम्पल. Then FPIA, that is the fluorescence polarization immunoassay. So this method is used for the fluorescent molecule as the labeled instant of the enzyme marking is more sensitive. So यहाँ पर labeled enzymes की बजाय आप लेते हो fluorescent molecules, तो उसके fluorescence के basis पे with the help of fluorimetry you can check the concentration of the sample. देन कीमोल्यूमिनेसेंस. तो कीमोल्यूमिनेसेंस बेसिकली एक ऐसी केमिकल रिएक्शंस रहती है जो कि जब रिएक्शंस टेक प्लेस करती है तो एनर्जी को इमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट. सो व्हेन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ इम्यूनोअसे टेक्नोलॉजी, द लाइट प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन इंडिकेट द अमाउंट ऑफ एनालाइट इन द सैंपल. सो विद द हेल्प ऑफ लाइट इंटेंसिटी यू कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनालाइट इन द सैंपल. So the most of the common chemiluminescence assay methods are either enzyme amplified or the direct chemiluminescence से measurement होता है. तो enzyme amplified भी हो सकती है और direct chemiluminescence measurement technique भी हो सकती है. Now next technique is ACMIA, that is the affinity chrome mediated immunoassay. So this technique is used to measure the drug concentration in which free and drug bound antibody enzymes conjugate are separated using magnetic particles. So with the help of magnetic particles you can separate that free and the drug bound antibody enzymes. So in this technique you have to take the sample, plus you have to add antibody enzyme plus magnetic particles coated with the analyte radiated bind to free the antibody enzyme conjugate. फिर इसको आप मैग्नेटिकली सेपरेट करते हो और सेपरेशन द सुपरनेटेंट कंटेन द एनालाइट. जो सेपरेटिंग सुपरनेटेंट रहता है उसमें आपके एनालाइट प्रेजेंट होते हैं. सो एनालाइट एंटीबॉडी एंजाइम कॉम्प्लेक्स रहता है. फिर उसको बाद में उसको कुवेट में ट्रांसफ़र करके सबस्ट्रेट को ऐड करके यू कैन मेजर द क्वांटिटी ऑफ द एनालाइट. Now CEDI. So CEDI is basically called as the cloned enzyme donor immunoassay. So it is used for the recombinant DNA technology. So basically to determine the quantity of the analyte in a sample, you have to take the sample must be added to a solution containing enzyme plus fragment. You have to add that with the enzyme plus fragment plus analyte plus conjugated base you have to add. The other enzymes fragments you can add. Then antibody directed against the analyte and substrates for the enzyme reactions. So competition for the antibody occurs between the analyte in the sample. So if the concentration is increases, that leads to the relatively small amount of the enzymes fragments analyte conjugated being prevented from forming ion active enzymes, and therefore high enzyme activity. You can see that these are saying if the concentration is high then the enzyme activity is high, if the concentration is low then the enzyme activity is low.
That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.